પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જમ્મુ કાશ્મીરના નૌશેરામાં જવાનો સાથે દિવાળીની ઉજવણી કરી તો દેશની સુરક્ષામાં તૈનાત જવાનો વચ્ચે પહોંચીને પ્રધાનમંત્રીએ તેમને મીઠાઈઓ ખવડાવી દિવાળીની ઉજવણી કરી હતી। જવાનોને સંબોધન કરતા પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું છે કે હું અહીં એક પ્રધાનમંત્રી તરીકે નહીં પરંતુ પરિવારના એક સભ્ય તરીકે આવ્યો છું। હું ગુજરાતમાં મુખ્યમંત્રી હતો ત્યારથી જ હંમેશા સરહદ પર દિવાળીની ઉજવણી કરતો રહ્યો છું। પોતાના સંબોધનમાં પ્રધાનમંત્રીએ સર્જિકલ સ્ટ્રાઇકનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો અને સૈન્યના પરાક્રમની પ્રશંસા કરી। તો પ્રધાનમંત્રી મોદીની જવાનો સાથે દિવાળીની ઉજવણી તો જ્યારે પણ પ્રધાનમંત્રીને મોકો મળ્યો છે જવાનો સાથે તેઓ દિવાળીની ઉજવણી કરતા હોય છે। તો જવાનોનું મોં મીઠું કરાવ્યું હતું પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ અને અહીં તેમણે એક ખાસ વાત કરી હતી। તેમણે કહ્યું કે હું અહીં પ્રધાનમંત્રી તરીકે નથી આવ્યો પરંતુ આપના પરિવારના સભ્ય તરીકે અહીં આવ્યો છું। કારણ કે સામાન્ય રીતે કોઈ પણ તહેવારની ઉજવણી આપણે પરિવાર સાથે કરતા હોઈએ છીએ અને પરિવાર સાથે જે પણ તહેવાર ઉજવીએ તેની ખુશી આપણી બમણી થઈ જતી હોય છે। પરંતુ સેનાના જવાનો દેશની રક્ષા કાજે સરહદ પર તેઓ અડગ છે અને આ સમયે જ્યારે પીએમ ત્યાં પહોંચ્યા હતા તો તેમણે આ વાત કરી અને જવાનોને પણ ભાવુક કરી દીધા હતા। કારણ કે તેમણે કહ્યું કે હું પ્રધાનમંત્રી તરીકે અહીંયા નથી આવ્યો પરંતુ પરિવારના સભ્ય તરીકે અહીંયા આવ્યો છું। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने भी अज्ञातवास के दौरान अपना कुछ समय इसी क्षेत्र में व्यतीत किया था। आज आप सबके बीच आकर मैं अपने आप को यहां की ऊर्जा से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूं। इतिहास बनते हैं, इतिहास बिगड़ते हैं, सत्ताएं आती हैं, सत्ताएं जाती हैं, साम्राज्य आसमान छूते हैं, ढहते हैं, लेकिन भारत हजारों साल पहले भी अमर था, भारत आज भी अमर है और हजारों साल बाद भी अमर रहेगा। हम राष्ट्र को शासन, सत्ता और साम्राज्य के रूप में नहीं देखते। हमारे लिए तो ये साक्षात जीवंत आत्मा है। इसकी रक्षा हमारे लिए केवल भौगोलिक रेखाओं की रक्षा भर नहीं है, हमारे लिए राष्ट्र रक्षा का अर्थ है इस राष्ट्रीय जीवंतता की रक्षा, राष्ट्रीय एकता की रक्षा और राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा। लंका विजय करने के बाद भगवान राम जब अयोध्या लौटे थे तो यही उद्घोष करके लौटे थे, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यानी सोने और समृद्धि से भरपूर लंका को हमने जीता जरूर है, लेकिन हमारी ये लड़ाई हमारे सिद्धांत और मानवता की रक्षा के लिए थी। हमारे लिए तो हमारी जन्मभूमि हमारी है, हमें वहीं लौटकर उसी के लिए जीना है। देश के अन्य हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग आज दिवाली का जब दूसरा दिन होता है तो नववर्ष की भी शुरुआत करते हैं और हमारे यहाँ तो हिसाब किताब भी दिवाली से पूरा होता है और दिवाली के दूसरे दिन से शुरू होता है। खास करके गुजरात में कल नया साल होता है। तो मैं आज नौशेरा की इस वीर भूमि से गुजरात के लोगों को भी और जहां जहां नववर्ष मनाते उन सबको भी अनेक अनेक मंगल कामनाएं उनके लिए देता हूं। नारी शक्ति को नए और समर्थ भारत की शक्ति बनाने का गंभीर प्रयास बीते 7 सालों में हर सेक्टर में किया जा रहा है। देश की रक्षा के क्षेत्र में भी भारत की बेटियों की भागीदारी
अब नई बुलंदी की तरफ बढ़ रही है। नेवी और एयरफोर्स में अग्रिम मोर्चों पर तैनाती के बाद अब आर्मी में भी महिलाओं की भूमिका का विस्तार हो रहा है। मिलिट्री पुलिस के द्वारा बेटियों के लिए खोलने के बाद अब महिला अफसरों को परमानेंट कमीशन देना इसी भागीदारी के विस्तार का ही हिस्सा है। अब बेटियों के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और